Hello everyone, welcome to this week's weekly market view for Monday the 31st of October to Friday the 4th of November 2022. My name is Vishal, so let's get started. Alright, so let's begin our analysis with the Nifty chart and the Nifty has been moving up since a few trading sessions. We are almost reaching this high point, which has been the point from where the market has reversed several times. And as I've said in the past sessions also, this is going to be a very, very crucial point for the market to decide where the next direction of this market is going to be heading. At the moment right now, it's looking a little bit more of a consolidation. As I said that we cannot conclude anything because if this candle closes where it is closed, then that means this consolidation could probably continue unless and until we see something like this to the upside, or then we break to the downside. The demand zone is pretty much intact. Nothing much has changed with respect to the demand zone, so the prices are still holding on to the level of demand, but these are going to be the crucial areas now, especially a break below 16,735 and a break above 18,370 in the days to come. So we'll have to see what the price action is going to be suggesting us in the coming days. Let's move on to the weekly chart. On the weekly chart, after all this consolidation, we are back into the weekly supply. So just let me remove all the tools and plug this back again. So this is your supply zone from where the price has touched multiple number of times, 1, 2, 3, 4, and can the price go again and retrace back from the upper levels? Surely yes. As you might be aware, SGX Nifty has indicated a extremely positive closing, and as I speak right now, the close on the weekend for the SGX Nifty was 18,028. I'm not too sure whether the markets will open that gap up on Monday, obviously, because that will always depend on where the Asian markets are opening. But we are definitely going to get a positive opening. हो सकता है कि ये जो opening है comparatively expectation से थोड़ी कम हो, but definitely एक gap up opening होगी. Now what this gap up opening might lead to is that it might lead to a lot of novice traders or investors trying to buy the gap. And this is something that you need to be very, very careful about. So just allow the market to gap up, let it allow to settle down, because probably the next decision will be decided once the market opens. So just be a little careful on Monday morning, and I'm sure Monday is also going to be a very, very volatile market session, taking into consideration. All right, let's move to the daily chart, or let's have a look at the daily chart. So if you look at the daily chart, let me just refresh the graph here. So we did have a consolidation move right now, but if you see very closely, we are still sitting in this supply zone, right? So जब तक ये supply zone break नहीं होता है ऊपर की तरफ, हम कुछ नहीं कह सकते हैं. हम expect कर रहे हैं कि market gap up open हो, और अगर market जो है वो करीबन 18,000 के आसपास मंडे के दिन gap up होता है, then there could be some supply within this candle that might come into play. So थोड़ा सा हमें छोटे टाइम फ्रेम से भी जाके देखना होगा कि क्या हमें इस पर्टिकुलर एरिया में कोई सप्लाई जोन दिखाई देता है जहाँ से सुबह के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए. सो हम थोड़ा सा एक छोटे से टाइम फ्रेम पे जाएंगे, शायद 15 मिनट के चार्ट पे जाके हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ है. और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, which is this area over here. It has played out pretty much once, और हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट फिर से इस सप्लाई जोन में ओपन हो जाए, थोड़ा सा डीप ओपन हो जाए. तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड बनाना चाहते हैं, यू कैन प्लेस द एंट्री हियर. स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको सही तरीके से लगाना पड़ेगा. सो यू माइट हैव टू गो इनटू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. लेट मी जस्ट हैव अ लुक इफ देयर इज एनीथिंग above that area. Yeah, so you can see that there is this one more very, very important area of supply here. So if you do happen to take the trade, let's say at the lower level, then stop loss जो है वो आपका इस ऊपर लेवल पे लगाना आपको चाहिए.
And if you individually just identify and plan a trade and take a trade at this level, then maybe you can put your stop loss above this high, right? So you're giving it a little bit of room. Definitely ये कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं होगा. अगर आप 80 पॉइंट 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये थोड़ा सा एक स्विंग या पोजिशनल ट्रेड आउटलुक ट्रेड हो सकता है. बट होपफुली मुझे लग रहा है कि शायद निफ्टी जो है वो काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को इस सप्लाई जोन में ट्रैप कर सकता है. So this level is likely to act as a trap. Also, it is coinciding with the 18,000 whole number. So just watch out for this area on Monday morning. If the market does gap up into this supply, please avoid long trades. Okay, so long से आपको buy से आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा और आपको रुकना पड़ेगा. अगर आप ये एंट्री नहीं लेना चाहते, अगर आपको लगता है कि ये एग्रेसिव एंट्री है, तो फिर आप रुक के शॉर्ट साइड की तरफ एक नई एंट्री बना के ले सकते हैं ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. But this is the level and let us see how this plays out on Monday morning. अगर हम ऑप्शंस की दुनिया में जाते हैं तो जो ऑप्शंस ट्रेडर है वो ऑप्शंस के प्रीमियम्स को देख के थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं, जो कि एक बेरिश स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्योंकि प्राइस जो है वो सप्लाई जोन में ओपन हो रहा है. और अगर हम देखेंगे तो प्रीमियम्स काफ़ी सस्ते हैं अभी. तो अगर आप कोई भी बेरिश स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं then your strategy should be more towards the debit side and not the credit side. तो options selling नहीं, लेकिन आपको options buying की तरफ आप फोकस कर सकते हैं. आप कोई स्प्रेड बना सकते हैं, डायरेक्शनल स्प्रेड, या फिर अगर आपको कोई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनानी है जहाँ पे आप एक नॉन डायरेक्शनल व्यू रखना चाहते हैं तो आप एक नॉन डायरेक्शनल डेबिट स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं. सो दिस इज द व्यू ऑन द निफ्टी. लेट्स मूव ऑन टू द बैंक निफ्टी. एंड कंपैरेटिवली Bank Nifty has been, the leader of the market, but somehow on Friday it has shown us something unusual, right? तो Friday के दिन थोड़ा सा Bank Nifty से थोड़ा सा weak trade कर रहा था, but of course that doesn't imply anything so yet. So let's go here. Let's remove all the tools. सो अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी काफ़ी अभी नज़दीक आ रहा है ऑल टाइम हाइस की तरफ. सो थोड़ा सा केयरफुल रहना हमें. मंथली कैंडल इज़ लुकिंग अ लिटिल पॉजिटिव राइट नाउ. सो हो सकता है अगर ये मंथली कैंडल ये प्रीवियस हाई के ऊपर अगर बंद होती है, दैट विल इंडिकेट दैट देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ मोमेंटम फॉर द बैंक निफ्टी टू मूव टू द अपसाइड. लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर फेल होता है बंद करना या क्लोज करना, then there is a possibility like the Nifty, Bank Nifty might also consolidate. Again, we might have to wait for another month for something like this to happen. Or then if Bank Nifty breaks down, then we might possibly see these areas coming into play. अगर हम डिमांड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट को एनालाइज करें तो बैंक निफ्टी पे कोई सप्लाई जोन नहीं है एंड बैंक निफ्टी इज एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू दिस डिमांड जोन. If you go to the weekly chart, a very clear indication that Bank Nifty is still holding on to this weekly supply. Although we can say that we have had a little bit of a bearish close on the weekly, which is possibly because of this supply over here to the left hand side, right? So this is that area from where the prices are coming. लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर निफ्टी गैप अप होता है मंडे के दिन तो बैंक निफ्टी भी वापस या फिर से इस मार्केट को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है. बट अ क्लोज अबाउट दिस विल बी वेरी क्रूशियल फॉर द मार्केट विच विल एक्चुअली डिसाइड कि बैंक निफ्टी को कौन सा डायरेक्शन लेना है. अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और वो फेल होता है, then again we might again move into a more wider consolidation range, right? So again this is going to be a very tricky situation for the market, so you've got to be a little patient to get the better entries. Let's move on to the daily chart. और डेली चार्ट पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है एंड इट इज़ मोर और लेस बिकॉज ऑफ दिस एंटायर एरिया ऑफ सप्लाई ओवर हियर. सो डेफिनेटली नॉट अ गुड एरिया टू गो लॉन्ग सिंस वी आर in supply, we are high on the curve, so we need to wait for either new shorts to be created or new supply zones to be created, or then we wait for the price to break this level, create new levels of demand and then start planning fresh long trades. अगर हम options की volatility देखें, so options की volatility
जैसे निफ्टी पे है वैसे ही बैंक निफ्टी पे है, ऑप्शंस के प्रीमियम सस्ते हैं। तो अगर कोई आप बेरिश स्ट्रैटेजी बिठाना चाहते हो तो यू कैन मोर और लेस प्लान सम डेबिट स्प्रेड्स डायरेक्शनल, एंड अगर आपका व्यू थोड़ा सा नॉन डायरेक्शनल है तो आप डेबिट साइड पे एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी बिठा सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द levels on the intraday chart of Bank Nifty to see if there is anything interesting that is forming here. Okay, so if you look at the intraday chart of Bank Nifty, there was this one level that we had identified in the last weekly analysis session, और ये जो level है ये काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है अभी। थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम आ गया है, मार्केट मंडे के दिन जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग गैप अप हो सकता है, वी माइट अगेन रीटेस्ट दिस लेवल, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल हियर बिकॉज आई वुडेंट वांट टू बी गोइंग शॉर्ट अगेन एट दिस लेवल, क्योंकि ये लेवल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो गया है और चांसेस हैं कि अगर बैंक निफ्टी वापस इस लेवल में ओपन होता है तो शायद चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके शायद ऊपर की लेवल तक चला जाए, राइट। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल एंड maybe just observe how this level plays out, लेकिन कोई नया ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट मत कीजिए। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द USDINR। और अगर हम USDINR देखते हैं, so again there is just one picture on the USDINR which is the most obvious picture that if you look at the monthly chart, it's showing a little bit of a sell-off, and that is obvious because the markets have been going up. USDINR or Nifty are inversely correlated to each other, but this is that level of demand। और अगर हम इसको विक टू विक मार्क करते हैं तो काफ़ी तगड़ा डिमांड है ये 80 हैंडल के आसपास वाला। And if you go on to the weekly chart, this is that same level over here, although we can see that there could be some demand a little above the 80 handle also. So let's quickly go on to the daily chart to see if there is anything. So this is that level of demand that I have been talking about, very subtle level, but still a level that can play out in case if the market reverses from here। अभी market जो है USDINR पे consolidate कर रहा है, so we might expect to see something like this happening। All right, so let's look at the sector for the week, and the sector for the week is Nifty Metal, and the reason why I have chosen this sector is because in the coming week we are going to be seeing Tata Steel announcing its results, right? So let's quickly look at the Nifty Metal sector. I will just close this chart here for the moment. We can. So what are we seeing on the Nifty Metal chart? अगर हम Nifty Metal chart को देखेंगे, so we are seeing that prices are reacting from this supply zone. Now generally ये कोई छोटा सप्लाई जोन नहीं, ये एक मंथली चार्ट है, तो यहाँ पे लॉन्ग्स को बहुत बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आता है इस सप्लाई जोन से, then market can retrace all the way back to this level. Alright, so just be a little careful. Since the Nifty Metal chart has hit a supply zone, we might tend to see consolidation, but the view will be a little bit more consolidation with more bearishness in the days to come. Okay, so just be a little careful. And of course, जैसे मैंने आपसे कहा कि निफ्टी का भी सपोर्ट होना चाहिए। अगर हम वीकली चार्ट पे जाए तो वीकली चार्ट पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि रिएक्शन हो रहा है। नाउ जैसे बैंक निफ्टी का वीकली सप्लाई डिमांड जोन होल्ड कर रहा है, वैसा CNX मेटल का भी जो डिमांड है वो भी होल्ड कर रहा है। सो इफ दिस लेवल ब्रेक्स, देन वी माइट सी अ फर्दर डाउनफॉल in the CNX metal, which will bring all the metal stocks and make them a little bit more weaker. But if that doesn't happen, then we might tend to see a consolidation. And if there is a, let's say, a strong momentum, and if the market breaks this area, then it is likely to probably break this area of supply as well. So this is going to be a very very crucial area. But right now weekly chart से हमें लग रहा है कि शायद metal sector जो है वो थोड़ा सा और consolidate कर सकता है। Alright, let's move on to the stock of the week now. Alright, so let's look at the stock of the week. The stock of the week is Tata Steel, and let's have some
let's have a look at some of the key levels of Tata Steel. So as you all know, Tata Steel will be announcing its earnings on Monday, which is the 31st, and we have to look at some key areas on Tata Steel that can probably give us some good opportunities. All right, so let's have a look at the weekly chart first, right? So अगर हम देखेंगे टाटा स्टील जो है वो इस वीकली सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है, राइट? एंड एज आई सेड कि अभी तक जो वीकली डिमांड है मेटल सेक्टर का वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है. सो वेरी वेरी लाइकली a lot of traders who are anticipating the market to remain between 111 and let's say 90 odd levels might have possibly planned some kind of a non-directional strategy here. हम देखेंगे कि options के premiums क्या है. So let's load the IV tool over here. So this is a tool which helps us to know whether the option premiums are cheap or expensive in one snapshot. So let's refresh the graph. And surprise, although Tata Steel is announcing its earnings on Monday, the option premiums don't seem to be inflated at all, which is very very surprising. क्योंकि जब earnings आता है तो लोगों के expectation जो है वो बढ़ते हैं और उसकी वजह से options के premium जो है वो भी महंगे होते हैं, right? But thanks to this tool and thanks to this indicator gauge, it is clearly telling us कि लोग जो है वो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अर्निंग से और उसके वजह से जो वॉलेटिलिटी है वो अभी भी सस्ती है, यानी कि जो ऑप्शन के प्रीमियम्स हैं वो सस्ते हैं. सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वॉलेटिलिटी सिनेरियो, आई वुडंट वांट टू बी डूइंग एनी काइंड ऑफ क्रेडिट स्ट्रेटजीज ऑन टाटा स्टील. इफ आई डू प्लान, आई कैन प्लान सम डायरेक्शनल ट्रेड्स ऑन टाटा स्टील. देयर कुड बी directional spreads, either bullish or bearish, but try to avoid credit strategies because the premiums are very very cheap. All right, so here is our analysis for this week. I hope you enjoyed this analysis. I have tried to be a little bit elaborate this time because in the past we saw your comments and काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि थोड़ा सा अगर आप डिटेल में एक पर्टिकुलर सेक्टर को कवर कर सकते हैं या फिर एक स्टॉक को कवर सकते हैं, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. सो आई हैव स्पेंट अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम दिस टाइम अराउंड to give you a gauge of what we expect the markets to do for this week. I hope you enjoyed this analysis, and if you do like our analysis, please do not forget to subscribe to our channel and do press the like button and do give your valuable comments in the comment section for us to give you more valuable sessions like these going forward. Have a lovely week everyone, and looking forward for the next weekend session. Bye bye. This should not be treated as a recommendation. Please conduct your own analysis or consult a financial advisor before investing.